Yes, again we are here. Welcome back to this online resource. Today we are going to start Intel 8086 microprocessor. Previously we had studied about Intel 8085, its architecture and its working. And today onwards I am going to start Intel 8086. Before starting the assembly language programming of Intel 8086, first I will demonstrate the architecture of Intel 8086. And from after this lecture I will start assembly language programming of Intel 8086. So previously we have discussed Intel 8085 and now I am going to start the architecture of Intel 8086 microprocessor. So without wasting the time, let's begin. Intel 8086 is the first successful 16-bit microprocessor. Few important things are introduced in 1978. In 1978 में introduced हुआ था. It was a 16-bit microprocessor. It means that all the registers are of 16 bits. The data on which it will operate will be of 16 bit. The flag register will be of 16 bit and the data bus will be of 16 bit. The bit size specifies that on how many number of bits it can operate. Next, it is a HMOS microprocessor, high speed metal oxide semiconductor. It is a HMOS, and while 8085 was the NMOS microprocessor. Metal oxide semiconductor is the material on which this is built, through which it is built. The frequency, अगर आपको याद हो तो Intel 8085 में frequency थी 3 megahertz, but here the frequency or clock frequency we can say it is the 5, 8 or 10 megahertz depending upon number of version, type of version. There are several versions of Intel 8086, so it varies from between 5 to 10 megahertz for different versions. And the next one is it contains 29,000 transistors. लगभग 29,000 के करीब ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे Intel 8086 की चिप में. और यहाँ पर भी नंबर ऑफ पिंस जो है वो 40 थी, जो 8085 में भी 40 पिंस थी और ये भी एक 40 पिन का आईसी पैकेज था. बट जो टाइप ऑफ पिंस थी, पैकेज की जो टाइप था, दैट वाज DIP, डुअल इनलाइन पैकेज. सो Intel 8086 was built on a DIP package, dual inline package of 40 pins. Each pin is multiplexed with 2 different tasks. Only one task can be performed at a time. ये Intel 8085 में भी था, वहाँ पर भी लगभग सारी पिंस मल्टीप्लेक्स्ड थी. इट मीन्स सभी के डुअल टास्क थे, 2 काम थे, एक टाइम पर केवल एक ही काम एक पिन करती थी. Data bus, as I told you already, that it is a 16-bit microprocessor, hence the size of register, the size of data bus, size of flag register will be of 16 bit. So data bus is of 16 bit and the address bus is of 20 bits. The first 16 bits, it means lower 16 bits of address bus are multiplexed with the data bus, and the 4 higher bits are carried out through A16, A17, A18 and A19 for different pins. And the lower 16 bits, it means A0 to A15 are multiplexed with D0 to D15. It means AD bus works in 2 ways. One time it is carrying either the lower 16 bits of address bus or 16 bit of data bus, because data is always 16 bit or it can be 8 bit also. So if data is of 8 bit, then it can be carried out by the either lower byte or higher byte. It means either from pin number D0 to D7 or pin number D8 to D15. But by default, pin number D0 to D7 is used for 8-bit data carrier. Next one, all registers are of 16-bit general purpose registers AX, BX, CX and TX. And in 8086, AX register works as a accumulator. Every register has accumulator, every microprocessor has a accumulator. So in 8086, AX is accumulator, while in 8085, A register was accumulator. Next, flag register.
Since this microprocessor is of 16 bits, so the size of flag register will be of 16 bit. But out of 16 bits, only 9 flags are available here, and the remaining 7 bits are undefined. The 9 flags, the 5 flags are same as it was in 8085, and the 4 are new flags: TF, DF, IF or OF, trap flag, direction flag, interrupt flag, and overflow flag. Out of these 9 flags, 6 flags are conditional flags that depends upon the operation or result of the previous instruction carried out by the ALU, while the remaining 3 flags are control flags that are used by the user. That the value of these 3 flags depends upon the user. These are used by the user. कौन से? ट्रैप फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग एंड इंटरप्ट फ्लैग. ट्रैप फ्लैग बेसिकली एग्जीक्यूशन में यूज होता है, असेंबलिंग जब करते हैं, एंड डायरेक्शन फ्लैग स्ट्रिंग के केस में यूज होता है, स्ट्रिंग को फॉरवर्ड पढ़ना है या रिवर्स में पढ़ना है. और इंटरप्ट फ्लैग जब इंटरप्ट्स जनरेट ना हो हमारे, जब अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं उस दौरान इंटरप्ट ना आए, उसके लिए इंटरप्ट फ्लैग को ऑन ऑफ करते हैं या अनेबल डिसेबल किया जाता है. जो ओवरफ्लो फ्लैग है दैट इज ऑल्सो कंडीशनल फ्लैग, including those 5 flags that were available into 8085. So it depends upon the value of the previous instruction of ALU. So this is basically the basic introduction of Intel 8086. Now we will move on. The functional unit of Intel 8086, or we can say that the architecture of Intel 8086. Very important question. It describes the whole architecture of Intel 8086. So there are 2 functional units of Intel 8086. The most important question always asked into the exams, बहुत आता है एग्जाम्स में, ध्यान से समझिएगा. बस इंटरफेस यूनिट पहली यूनिट है. क्या काम है इसका? जितना भी कम्युनिकेशन करना है आउटसाइड वर्ल्ड से, डेटा को फेच करना मेमोरी से, आईओ डिवाइस से, स्टोर करना क्यू में, रिजल्ट्स को वापस ले जाना मेमोरी आईओ डिवाइस पे, ये सारा डेटा ट्रांसमिशन का काम ये है आपका बस इंटरफेस यूनिट का. इसका नाम ही है बस इंटरफेस यूनिट. क्या है ये? बस की इंटरफेसिंग, यानी कि बस के थ्रू इंटरफेसिंग करती है किसके? आउटसाइड वर्ल्ड की माइक्रो प्रोसेसर के साथ. बाहर की दुनिया से डेटा को इन करना, आउट करना माइक्रो प्रोसेसर में, ये काम है बस इंटरफेस यूनिट का. एंड द सेकेंड वन इज execution unit that performs all the operations with the help of decoding circuitry, instruction cycles, and arithmetic logic unit. All the instructions are controlled by the control unit. All the instructions are decoded by the decoding circuitry, hexa to binary decoder that converts the hexadecimal opcode, the operation code, into the binary form, and the arithmetic logic unit that performs all the arithmetic and logical instructions, addition, subtraction, complement. In fact यहाँ पर तो multiplication और division भी होता है. In the 8085 में it was not possible to perform the multiplication or division through any instruction. It was done with some other logic, like we use additive method of multiplication. अगर हमें multiplication करना होता था 2 into 4 तो हम करते थे 2 plus 2 plus 2 plus 2, because there was no instruction into the instruction set to perform the multiplication or division operation. So additive method was used for multiplication and subtraction method was used for division. But here we have multiplication and division. In fact we also have some string instructions. ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ में इंस्ट्रक्शंस पे परफॉर्म करने वाले ऑपरेशंस भी अवेलेबल हैं इनटू इंटेल 8086 में. तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट, एंड आफ्टर दैट programs of Intel 8086 assembly language programming, and then we will execute it onto the C compiler. So there is one more topic, one more term, pipelining. The parallel processing of BIU and EU is called pipelining. Basically pipelining makes the processing speed faster. How? The BIU bus interface unit और EU दोनों पैरेलल में काम करते हैं. इसको हम डायग्राम से समझते हैं. एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं. दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ Intel 8086. Here we can see that
The execution unit is the combination of data registers, pointer registers, and index registers. It means AX, BX, CX, TX. These are the registers. These are used for storing data. These are the general purpose registers. There are two pointer registers called stack pointer and base pointer (SPBP), and two index registers SI and DI. Besides this, there is a arithmetic logic unit and flag register. Also, the decoding circuitry and control unit is also the part of execution unit. The execution unit performs all the operations upon the instruction of control unit and with the help of arithmetic logic unit. The second unit is the bus interface unit, which is used for communication or interfacing with the outside world. So it is basically a combination of segment registers, code segment, data segment, stack segment, and extra segment. This is a different topic. एक complete topic is segment registers and instruction pointer. These registers plus bus control logic or bus interface unit. With this control logic, the microprocessor communicates with the outside world with the help of external buses. And this is the instruction queue. BIU आउटसाइड वर्ड से इंस्ट्रक्शंस को फेच करके और इस इंस्ट्रक्शन क्यू में फीफो ऑर्डर में इंसर्ट करती है या पुश करती है या स्टोर करती है. और फिर फीफो ऑर्डर मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो इंस्ट्रक्शन पहले स्टोर की जाएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी एलयू के द्वारा थ्रू, और जो बाद में होगी वो बाद में. इट मीन्स फीफो ऑर्डर इज फॉलोड इनटू द इंस्ट्रक्शन क्यू. इंस्ट्रक्शन क्यू स्टोर्स all the instructions fetched from the various sources or from various addresses and are stored into it for execution. And this is the whole task is performed by the bus interface unit. ये दोनों का काम है. एग्जीक्यूशन यूनिट अपना काम करती है, BIU अपना काम करती है. दोनों इंडिपेंडेंट यूनिट हैं और दोनों पैरेलल में वर्क करती हैं. इट मीन्स एट द टाइम when execution unit is executing an instruction or decoding an instruction, at the same time the bus interface unit is fetching the instruction from the memory or IO device and inserting or storing it into the 6-byte instruction queue for the execution, for the further execution, for the further processing. So this parallel processing is called pipelining. This process of simultaneous execution of instructions is called pipelining. So this was the basically architecture of Intel 8086, working of Intel 8086, and in the next lecture we will start assembly language programming of Intel 8086. So पहले हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ Intel 8086. टोटल 5 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं Intel 8086 में, और फिर बनाएंगे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स और फिर उनको रन कराएंगे सी लैंग्वेज के कंपाइलर पे, बिकॉज सी जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है जिसपे हम हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम रन कराते हैं और असेंबली की को भी सपोर्ट करती है. इट मीन्स असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को भी हम रन करा सकते हैं ऑन द सी कंपाइलर. तो हम सी के कंपाइलर पे अपने इंटेल 8086 के प्रोग्राम्स को रन कराएंगे. टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर.